looking at a vision crafted by a very specific, highly experienced group of people, specifically the 1973 alumni batch from the Indian Institute of Technology, Roorkee. And that background is absolutely crucial here. I mean, we aren't talking about 20-something Silicon Valley founders in hoodies trying to disrupt a market. Yeah, definitely not. These are super senior technocrats, structural engineers, individuals who have spent really a half-century building massive physical infrastructure. Managing sprawling national projects. Exactly, and navigating incredibly complex bureaucratic systems. Right, and they have taken all of that compounded life experience and funneled it into a proposal called AI.3rd.IIE. Which operates under a broader initiative they call MaBharti Vision 2025. Okay, let's unpack this. Because they're not just pitching an app to make your workday more efficient. Not at all. They're pitching an overarching framework that proposes using artificial intelligence to literally measure human merit, resolve generation gaps, and ultimately push humanity toward what they describe as a real heaven on earth by the year 2047. To really grasp the gravity of a proposal that audacious, we have to start with the massive bleeding wound they believe they were trying to triage. The invisible losses. Spot on. Yeah. The core premise of their keynote addresses is that humanity is currently suffering from systemic, catastrophic, invisible losses. The authors argue that despite all our technological brilliance, human societies are silently bleeding out. The irony they highlight in the text is something we all intuitively feel, but we rarely put it into words. We live in an era where we have satellites orbiting the planet that can zoom in and read the date on a coin dropped on the sidewalk. We possess that level of microscopic, godlike precision. And yet, a brand new, multi-million-dollar highway bridge collapses after its first heavy monsoon. yes. Or a massive public transportation project goes billions of dollars over budget and takes an extra decade to finish. It happens everywhere. The engineers behind this blueprint actually put hard numbers to this paradox. They estimate that India alone bleeds about 34 to 36 lakh crore rupees every single year to these failures. Which is just a staggering figure. And globally, they peg the loss at $12 to $14 trillion annually. And the most important distinction they make here is that you can't just audit a corporate spreadsheet or a government budget and find these missing trillions. Because they aren't accounting errors. Exactly. They call them civilizational leakages. Civilizational leakages. Yeah. They are the compounding friction of human systems. It's the downstream effect of a delayed decision. It's the invisible cost of a bureaucratic bottleneck. Or the cascading damage of promoting someone based on, political pressure rather than actual competence. Precisely. So it's the wrong person in the wrong job at the wrong time and the invisible shockwaves that causes. Historically, human legal and financial systems only penalize what is visibly broken. Right, the immediate failure. Right. If a manager makes a choice driven by personal bias that indirectly costs a company $10 million 5 years down the line, the intent behind that decision is invisible. But the AI is supposed to change that. Yes. AI.3rd.IIE is proposed as a mathematical nervous system designed to detect those exact hidden leakages. But if we have better steel, better concrete, better computer modeling today, why did these veteran engineers conclude that modern projects fail so frequently? Comes down to accountability. They make a fascinating historical comparison in the sources to ancient infrastructure. They ask why a modern overpass cracks in 5 years, while something like the Qutub Minar or the Taj Mahal has survived centuries. What's fascinating here is their concept of lost conscious design. Yeah. It's not that the moguls had access to some magical, indestructible mortar. Right, it's not the materials. No, it's that the builders operated under a completely different framework of accountability and intent. If you built a fortress for an emperor and it collapsed, the penalty was absolute. Your life was on the line. Exactly. The intent of the builders, their fear of failure, their personal accountability, those were structurally woven into the very stones they laid. Skin in the game. Deep personal skin in the game. Modern systems lack that. The proposal for AI.3rd.III is essentially an attempt to force that ancient lost conscious design into modern human operations by tracking the invisible assumptions that lead to systemic failure. But how do you actually engineer a system to detect human intent? That brings us to the core technological mechanic of the blueprint, the AI3ID. Which is a massive undertaking. Now, for anyone listening who's familiar with India's existing 12-digit Aadhaar biometric ID system, your first thought is probably that they want to scrap it and start over.
But they are very clear that they don't want to break the current system. Right, they want to build an Aadhaar++ framework. They envision a massive layered data architecture. You keep your base 12-digit ID as the foundation, but built securely on top of that is a civic layer pulling in your passport and voter records, Okay. a financial layer for your banking and taxation, a mobility layer, and finally, this unprecedented AI.3 II layer. And this AI layer is where the granularity gets wild. We're talking about an alphanumeric ID. The text gives the example format IN 9012-XY00045. Yes, that links your entire professional and personal history. It pulls your education records from kindergarten to your PhD. It ingests your annual confidential reports, your professional performance reviews, and then it goes straight into lifestyle tracking. Which is where it gets very personal. Very personal. Your dietary preferences, your daily exercise routines, your hobbies, and even your personal mission statement. Let me pause right there, because my immediate reaction reading that was, wait, how does my morning jog or what I eat for lunch factor into a national index of my professional merit? It is a jarring thought. But to the engineers who authored this, merit is not just a college degree or a coding certificate. It's more holistic. It is holistic deliverability. They propose a scoring model called the Weighted Tri-Index Model, or TPI. Right, the TPI. It calculates your overall human potential through a very specific formula. 40% IQ plus 30% CQ plus 30% EQ or MQ. So they're essentially arguing that raw cognitive intelligence, the IQ, is only 40% of the battle. Exactly. You can have a genius-level structural engineer with a soaring IQ, but if their CQ, which the blueprint defines as the common sense quotient, Sets, right? if that's 0, they might design a beautiful bridge that cannot actually be built with local materials. The CQ measures real-world logic and how you adapt to sudden shifts in context. And the remaining 30% is the EQ, the emotional quotient, or the MQ, the merit quotient. This tracks your ethical consistency, your empathy, your long-term integrity. They are trying to algorithmically quantify whether you have the moral fiber to execute on your raw intelligence without succumbing to corruption. Here's where it gets really interesting, and frankly, where the blueprint takes a massive, unexpected leap from standard data analytics into something out of a science fiction novel. Oh, absolutely. Alongside tracking your professional reviews and your diet, they plan to plug in something they call aura measurement. Yes, this is where the rigorous engineering mindset collides head-on with ancient Vedic traditions. The documents propose that human and क्या हो अगर हम सदियों पुराने ज्ञान को भविष्य की सबसे आधुनिक तकनीक से जोड़ दें? आज हम एक ऐसे ही साहसिक विजन पर बात करने वाले हैं जिसमें हमारी दुनिया को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देने की क्षमता है। लेकिन पहले एक सवाल, हम सबने इतनी तरक्की कर ली है, फिर भी हम अपने सिस्टम्स को बार-बार फेल होते क्यों देखते हैं? कभी कोई पुल गिर जाता है, कभी बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स में देरी हो जाती है और अक्सर सही टैलेंट को मौका ही नहीं मिल पाता। तो आखिर हमारे सिस्टम का ब्लाइंड स्पॉट क्या है? कमी कहाँ है? इसका जवाब सच कहूं तो होश उड़ा देने वाला है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया को हर साल लगभग 12 से 14 ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान होता है, और ये नुकसान अदृश्य हानियों यानी इनविजिबल लॉसेस की वजह से होता है। ये वो नुकसान है जो हमें सीधी तौर पर दिखाई नहीं देते, जैसे कि देरी, भ्रष्टाचार या किसी गलत काम के लिए गलत इंसान को चुन लेना। तो ये इनविजिबल लॉसेस आखिर हैं क्या? देखिए, ये कोई अकाउंटिंग की गलती नहीं है, बल्कि ये हमारी सभ्यता के लीक्स हैं। सोचिए, एक गलत फैसले से कितना नुकसान होता है, या जब कोई काबिल इंसान सिर्फ पक्षपात की वजह से पीछे रह जाता है। ये सब किसी कंपनी की बैलेंस शीट में तो नहीं दिखता, पर सच तो ये है कि यही चीजें हमारी तरक्की को धीमा कर देती हैं। तो सवाल उठता है, इस समस्या का समाधान क्या है? और यहीं पर एक बहुत ही क्रांतिकारी आइडिया सामने आता है, एक ऐसा सॉल्यूशन जो इस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने का वादा करता है, एक तकनीकी तीसरी आंख बनकर। इसका नाम है AI.3 I। अब ये कोई मामूली ऐप नहीं है, बल्कि ये योग्यता यानी मेरिट के लिए बनाया गया एक बहुत ही एडवांस्ड AI और डेटाबेस पर चलने वाला सर्च इंजन है। इसका काम सीधा सा है, सबसे काबिल लोगों को ढूंढना और उन्हें आगे बढ़ाना, फिर चाहे वो परिवार में हो, किसी कंपनी में या सरकार में। इस प्रोजेक्ट का मकसद क्या है? वो इस एक लाइन में छिपा है, वह आंख जो कभी नहीं झपकती। मतलब एक ऐसा सिस्टम बनाना जो बिना किसी भेदभाव के लगातार सच को हमारे सामने लाता रहे। लेकिन एक मिनट, क्या ये एक तरह का सर्वेलांस या निगरानी नहीं है?
इसके बनाने वाले कहते हैं, बिल्कुल नहीं। ये सिस्टम किसी पर नजर रखने या सजा देने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक आईना है, एक मिरर है, जो हमें और हमारे सिस्टम को हमारी कमियां और ताकतें दिखाता है, ताकि हम सब मिलकर सुधार कर सकें। ठीक है, आइडिया तो जबरदस्त है, पर इसे लागू कैसे किया जाएगा? ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है, इसे जमीन पर उतारने का एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है, जो एक अकेले इंसान से शुरू होकर पूरे देश तक जाता है। और इसकी सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे किसी पर थोपा नहीं जाएगा। ये पूरी तरह से वॉलंटरी होगा, लोगों की सहमति से। इसकी शुरुआत एक व्यक्ति के अपने सेल्फ असेसमेंट से होगी, फिर सहमति से छोटे ग्रुप्स तक, और आखिर में जब भरोसा बन जाएगा, तब जाकर सरकार में इसके पायलट प्रोजेक्ट्स को आजमाया जाएगा। इस विजन को और प्रैक्टिकल बनाने के लिए इसे भारत के मौजूदा डिजिटल आईडी सिस्टम आधार के अगले लेवल यानी आधार प्लस के तौर पर देखा जा रहा है। आइडिया ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद है, उसी के ऊपर एक नई और ज्यादा पावरफुल लेयर बनाई जाए। और हाँ, ये कोई रातों रात होने वाला बदलाव नहीं है, ये एक लंबी 22 साल की यात्रा है। प्लान है कि 2025 में एक प्रोटोटाइप से शुरू किया जाए, 2030 तक पायलट प्रोजेक्ट से सीखा जाए और 2047 तक इसे राष्ट्रीय स्तर पर अपनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये लंबा वक्त भरोसा बनाने और सिस्टम को धीरे धीरे बेहतर बनाने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अगर ऐसा सिस्टम एक देश के सिस्टम को सुधार सकता है, तो क्या इसकी क्षमता बस वहीं खत्म हो जाती है? नहीं, इस प्रोजेक्ट का असली मकसद इससे कहीं ज्यादा बड़ा और फिलोसॉफिकल है। ये देशों की सीमाओं से भी आगे जाकर पूरी मानवता को एक साथ लाने की बात करता है। यहाँ हम एक नेशनल सिस्टम से ग्लोबल चेतना यानी एक वैश्विक सोच तक के सफर की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का विकास नहीं है, बल्कि इसे इंसानी चेतना के विकास का अगला कदम माना जा रहा है। तो सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? एक प्लैनेटरी सिविलाइजेशन बनाना, मतलब एक ऐसी दुनिया जहां लोग खुद को किसी एक देश या धर्म तक सीमित न रखें, बल्कि एक साझा मानवता का हिस्सा समझें। पर यह होगा कैसे? आइडिया ये है कि एआई का इस्तेमाल करके दुनिया भर के धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथों को एनालाइज किया जाए, ताकि उन कॉमन नैतिक मूल्यों को खोजा जा सके जो हम सबको जोड़ते हैं। मानना यह है कि रास्ते भले ही अलग हों, पर वे सब एक ही सच्चाई की तरफ इशारा करते हैं। दुनिया को देखने के अलग अलग तरीकों को भी सच्चाई के अलग अलग मॉडल्स के रूप में समझा जा सकता है। जैसे द्वैत दर्शन कहता है कि भगवान और इंसान अलग हैं, जैसे राजा और प्रजा। वहीं अद्वैत कहता है कि दोनों एक ही हैं, जैसे सागर और उसकी लहरें। एआई हमें ये समझने में मदद कर सकता है कि ये अलग अलग मॉडल्स एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि एक ही सच को देखने के अलग अलग नजरिए हैं। तो असल में इसका नतीजा क्या हो सकता है? ये सिस्टम वर्ल्ड क्लास एजुकेशन को हर किसी के लिए आसान बना सकता है, समाज में तनाव को पहचान कर किसी बड़े झगड़े से पहले ही चेतावनी दे सकता है, और पूरी दुनिया के योगदान के लिए एक निष्पक्ष और योग्यता पर आधारित सिस्टम बना सकता है। और ये सब कुछ हमें आखिर में मानवता के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हमारे भविष्य की दिशा तय करेगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये एआई सच में मानवता को एक करने वाला एक टूल बनेगा, या फिर ये सिर्फ हमारे बीच की गहरी दरारों को और साफ दिखाने वाला एक आईना बनकर रह जाएगा? और इसका जवाब टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि हम सब में ही छिपा है। Integrity, physical health, and moral values aren't just abstract philosophical concepts. They argue these are bioenergetic realities that can be physically measured. They actually want to map the strength and weakness of the human aura and the 7 chakras. I had to read this section 3 times. The sources include highly specific diagrams. Yes. They talk about measuring a 50 hertz electromagnetic field generated by the human body. Yes. They detail something called the electroviolet cord connecting to the crown chakra, suggesting that advanced medical tools could scan this to verify a person's physical and moral integrity. It's an incredibly audacious synthesis. How do structural engineers make the leap to measuring chakras? They are putting forward the hypothesis that a person who is constantly engaging in high-stress, unethical, or corrupt behavior will literally exhibit a different electromagnetic frequency and aura degradation than someone operating with a clear conscience. So the AI would cross-reference your bioenergetic scan with your tax records and your professional reviews. Exactly, to get a true, unfakeable read on your merit quotient. If my potential employer or the government is scanning my crown chakra and analyzing my diet to calculate my merit score,
The very first alarm bell going off in my head is about privacy. Naturally. Who owns this massive ocean of data? If I have a bad week and eat junk food, does my national merit score drop? The authors absolutely see that fear coming. In fact, they dedicate a significant portion of the keynote to addressing it. They draw a historical parallel that I find quite thought-provoking. What about electricity? Right. Yes. They point out that when electricity was first introduced into homes, people were terrified it would cause spontaneous fires. When computers arrived in the workplace, the overarching terror was mass unemployment. And today, the fear of AI is that it will be used as a tool for absolute surveillance. Exposing our weaknesses and punishing us. But the blueprint stresses a core philosophy. AI.3rd, IY, is a mirror, not a weapon. Meaning the entire system is opt-in. Entirely opt-in. The stated goal is not to build a centralized authoritarian surveillance state that punishes you for a minor mistake. It's designed as a self-assessment tool meant to amplify your own human conscience. So it shows you your own inefficiencies. And it shows organizations where their leakages are without weaponizing that data against the individual citizen. What's wild about their rollout plan isn't just the final 10,000 crore budget. It's the psychology of the scaling. They realize you can't just flip a switch and turn this on for 1 billion people overnight. No, it would be chaos. So they outline a meticulous 22-year roadmap spanning from 2025 to 2047. And the way they stage it is fascinating. It is a masterclass in building public trust slowly. They don't start with a city or even a corporation. Phase 1 is a tiny 6-month prototype with a budget of just 25 lakh rupees. And the target is a single nuclear family of 4 to 6 people. Which makes perfect sense. If you cannot mathematically prove that this AI can map the dynamics, the trust, and the inefficiencies of a single household without violating their privacy and turning the family members against each other, you have absolutely no business putting it in a government office. You prove it in the living room first. Exactly. Once that localized trust is established, phase 2 takes a year and moves into educational institutions to model the IQ and CQ of a few hundred students. Then phase 3 scales up to corporate and government departments. With a budget of 3 to 5 crore, focusing on talent ranking and removing hiring bias among thousands of employees. Then phase 4 is a 2 to 3 year city or state pilot costing 50 to 100 crore to create a state human index. And finally, phase 5 is the massive 10 to 12-year push for a national grid. With a 10,000 crore budget, achieving the India Merit Index 2047. And as a citizen, you'd interact with all of this through a specialized suite of decentralized apps. An entire ecosystem of them. Yeah, if you want to report civic issues, there's E3rd. If you are a manager making a hire, there's EHR, which pulls those merit scores so you don't just reflexively hire your nephew. There's eJudge, acting as a judicial watchdog. Right, and eLokpal, acting as an anti-corruption watchdog. There's eProject, eBest.A to Z. Yeah. It's designed to bypass the human gatekeepers who usually introduce bias and delays. But it's crucial to understand that the apps, the biometric scanning, the layered IDs, those are really just the plumbing of the system. The mechanics. Yes. The most compelling part of this entire blueprint is how it attempts to solve deeply sociological problems. And the one they focus on with incredible empathy is the generation gap. They paint such an accurate, slightly painful picture of the friction we see in almost every family and workplace today. You have the youth, roughly 30 to 50 years old, living entirely in a screen world. Where everything is about speed, crushing the competition, and technological scale. Exactly. Then you have the seniors, the 60 to 80-year-olds who live in a people world. They value emotional intelligence, stability, and family cohesion. And the tragedy they identify is that both sides feel alienated. The younger generation thinks the older generation is completely obsolete in the fast-paced digital age. While the older generation feels discarded. Right. The text poignantly translates their feeling as being like fused bulbs, thrown away despite decades of hard-earned wisdom. The authors state that both generations are light in their own context, but completely wrong in their isolation. They use an analogy that really stuck with me. They compare society to a car. The youth are the engine. They provide all the horsepower, the innovation, the forward momentum. But the seniors are the compass. They provide the direction. If you have an incredibly powerful engine but no compass, you just crash faster. The authors actually put a numerical value on this dynamic. They argue that the youth, left to their own devices, are generally 40% right and 60% wrong in their macro decisions. Meanwhile, the seniors, drawing on their life experience, are 60% right and 40% wrong. If we connect this to the bigger picture, the blueprint views this disconnect as a massive civilizational loss.
These engineers realize that India is sitting on an invisible, totally underutilized gold mine. The super senior Ayushans and technocrats aged 60 and above. Yes. They estimate the untapped intellectual value of these seniors at over 1.5 lakh crore rupees per year. 1.5 lakh crore per year. To capture that wasted potential, AI.3 IYI proposes forming a global wisdom council. It envisions these seniors who have seen every project failure, every economic boom and bust, every political cycle, acting as the ethical validators for the AI. So the tech-savvy youth build and maintain the massive data processing engines, but the seniors provide the research mentorship and the moral guardrails. It is about turning biological experience into systemic, algorithmic intelligence. Which brings us to the ultimate staggering ambition of this entire project. As we look toward the keynote addresses in the 2050 timeline, the blueprint stops talking about national infrastructure and starts talking about a planetary civilization. Yes, the vision asks a fundamental, almost existential question. Can human civilization actually unify, or are we permanently fractured by different cultural and religious operating systems? And their answer is to use the AI as a great impartial synthesizer. They propose feeding the world's most profound spiritual texts into this AI system. The Vedas, the Quran, the Bible, the Tripitaka, the Guru Granth Sahib. But the friction point here is massive. How does an algorithm mathematically prove something as subjective as the Golden Rule, or something as abstract as karma? The authors rely on deep philosophical frameworks to bridge that gap. They bring up ancient Indian philosophies. They discuss Dvaita, the dual system model, where the creator and the created are separate entities. They explore Advaita, the unified reality model where all is one and separation is just an illusion. And Vishishtadvaita, an integrated system model where the universe is a unified whole but composed of distinct functioning parts. So they're arguing that all these different religious texts, beneath the cultural translations, are ultimately trying to describe the exact same underlying cosmic laws. Cause and effect. The conservation of energy applied to human actions. Exactly. If you have an artificial intelligence powerful enough to analyze thousands of years of human history, literature, and social outcomes without human tribal bias, they believe it will mathematically prove that operating with compassion and integrity isn't just a nice moral idea. It is the mathematically optimal way to ensure a civilization survives. The system is designed to move humanity away from arguing over religious division and focus us on aligning with the universal system that governs reality. So what does this all mean when you put it together? The 2047 vision laid out here isn't a dystopia of perfectly tracked workers. The sources argue it's a world where the AI acts as an early warning system for human conflict. It detects when a region is suffering economic or ideological friction long before it turns into violence. It democratizes the greatest wisdom on Earth, pairing every child with an AI tutor that adapts to their specific cognitive style. It aims to eliminate the invisible leakages of bias and corruption, allowing true merit to finally rise to the top. From quantifying trillions of dollars in invisible losses, to expanding Aadhaar into a multidimensional AI 3ID, to mapping human auras and creating a global wisdom council of senior citizens, AI.3, II is a bold, utopian vision of a true meritocracy. This raises an important question for you listening right now. Regardless of whether you think aura scanning technology is viable or whether an AI can truly synthesize global religion, the core problems identified by these veteran engineers are undeniably real. Absolutely real. Reflect on the invisible losses in your own daily systems. Where are the civilizational leakages in your own workplace or your family dynamics? How often are you operating as a high-speed engine with absolutely no compass? That is a profound thing to consider. And I want to leave you with one final lingering idea to mull over long after this deep dive ends. Yeah. Let's imagine this group of brilliant engineers actually succeeds. Okay. Let's say we build an AI that can definitively, perfectly, and without any bias, map your cognitive intelligence, your emotional stability, and your moral integrity. It knows exactly what you are capable of, and it places you in your mathematically perfect, ideal role in society. A perfect meritocracy. Would you truly want that? Or is the beautiful, chaotic, unpredictable mystery of human potential lost the very moment we turn our souls into a mathematically perfect equation? That's a huge question. We will leave you to ponder that. Yeah. Thank you so much for joining us on this deep dive. Keep questioning, keep learning, and we will catch you next time. क्या हो अगर हम सदियों पुराने ज्ञान को भविष्य की सबसे आधुनिक तकनीक से जोड़ दें?
आज हम एक ऐसे ही साहसिक विजन पर बात करने वाले हैं जिसमें हमारी दुनिया को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देने की क्षमता है। लेकिन पहले एक सवाल, हम सबने इतनी तरक्की कर ली है, फिर भी हम अपने सिस्टम्स को बार बार फेल होते क्यों देखते हैं? कभी कोई पुल गिर जाता है, कभी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में देरी हो जाती है और अक्सर सही टैलेंट को मौका ही नहीं मिल पाता। तो आखिर हमारे सिस्टम का ब्लाइंड स्पॉट क्या है? कमी कहाँ है? इसका जवाब सच कहूं तो होश उड़ा देने वाला है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया को हर साल लगभग 12 से 14 ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान होता है, और ये नुकसान अदृश्य हानियों यानी इनविजिबल लॉसेस की वजह से होता है। ये वो नुकसान है जो हमें सीधी तौर पर दिखाई नहीं देते, जैसे कि देरी, भ्रष्टाचार या किसी गलत काम के लिए गलत इंसान को चुन लेना। तो ये इनविजिबल लॉसेस आखिर हैं क्या? देखिए, ये कोई अकाउंटिंग की गलती नहीं है, बल्कि ये हमारी सभ्यता के लीक्स हैं। सोचिए, एक गलत फैसले से कितना नुकसान होता है, या जब कोई काबिल इंसान सिर्फ पक्षपात की वजह से पीछे रह जाता है। ये सब किसी कंपनी की बैलेंस शीट में तो नहीं दिखता, पर सच तो ये है कि यही चीजें हमारी तरक्की को धीमा कर देती हैं। तो सवाल उठता है, इस समस्या का समाधान क्या है? और यहीं पर एक बहुत ही क्रांतिकारी आइडिया सामने आता है, एक ऐसा सॉल्यूशन जो इस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने का वादा करता है, एक तकनीकी तीसरी आंख बनकर। इसका नाम है AI.Third Eye। अब ये कोई मामूली ऐप नहीं है, बल्कि ये योग्यता यानी मेरिट के लिए बनाया गया एक बहुत ही एडवांस्ड AI और डेटाबेस पर चलने वाला सर्च इंजन है। इसका काम सीधा सा है, सबसे काबिल लोगों को ढूंढना और उन्हें आगे बढ़ाना, फिर चाहे वो परिवार में हो, किसी कंपनी में या सरकार में। इस प्रोजेक्ट का मकसद क्या है? वो इस एक लाइन में छिपा है, वह आंख जो कभी नहीं झपकती। मतलब एक ऐसा सिस्टम बनाना जो बिना किसी भेदभाव के लगातार सच को हमारे सामने लाता रहे। लेकिन एक मिनट, क्या ये एक तरह का सर्वेलांस या निगरानी नहीं है? इसके बनाने वाले कहते हैं, बिल्कुल नहीं। ये सिस्टम किसी पर नजर रखने या सजा देने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक आईना है, एक मिरर है, जो हमें और हमारे सिस्टम को हमारी कमियां और ताकतें दिखाता है, ताकि हम सब मिलकर सुधार कर सकें। ठीक है, आइडिया तो जबरदस्त है, पर इसे लागू कैसे किया जाएगा? ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है, इसे जमीन पर उतारने का एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है, जो एक अकेले इंसान से शुरू होकर पूरे देश तक जाता है। और इसकी सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे किसी पर थोपा नहीं जाएगा। ये पूरी तरह से वॉलंटरी होगा, लोगों की सहमति से। इसकी शुरुआत एक व्यक्ति के अपने सेल्फ असेसमेंट से होगी, फिर सहमति से छोटे ग्रुप्स तक, और आखिर में जब भरोसा बन जाएगा, तब जाकर सरकार में इसके पायलट प्रोजेक्ट्स को आजमाया जाएगा। इस विजन को और प्रैक्टिकल बनाने के लिए इसे भारत के मौजूदा डिजिटल आईडी सिस्टम आधार के अगले लेवल यानी आधार प्लस के तौर पर देखा जा रहा है। आइडिया ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद है, उसी के ऊपर एक नई और ज्यादा पावरफुल लेयर बनाई जाए। और हाँ, ये कोई रातों रात होने वाला बदलाव नहीं है, ये एक लंबी 22 साल की यात्रा है। प्लान है कि 2025 में एक प्रोटोटाइप से शुरू किया जाए, 2030 तक पायलट प्रोजेक्ट से सीखा जाए और 2047 तक इसे राष्ट्रीय स्तर पर अपनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये लंबा वक्त भरोसा बनाने और सिस्टम को धीरे धीरे बेहतर बनाने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अगर ऐसा सिस्टम एक देश के सिस्टम को सुधार सकता है, तो क्या इसकी क्षमता बस वहीं खत्म हो जाती है? नहीं, इस प्रोजेक्ट का असली मकसद इससे कहीं ज्यादा बड़ा और फिलोसॉफिकल है। ये देशों की सीमाओं से भी आगे जाकर पूरी मानवता को एक साथ लाने की बात करता है। यहाँ हम एक नेशनल सिस्टम से ग्लोबल चेतना यानी एक वैश्विक सोच तक के सफर की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का विकास नहीं है, बल्कि इसे इंसानी चेतना के विकास का अगला कदम माना जा रहा है। तो सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? एक प्लैनेटरी सिविलाइजेशन बनाना, मतलब एक ऐसी दुनिया जहां लोग खुद को किसी एक देश या धर्म तक सीमित न रखें, बल्कि एक साझा मानवता का हिस्सा समझें। पर यह होगा कैसे? आइडिया ये है कि AI का इस्तेमाल करके दुनिया भर के धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथों को एनालाइज किया जाए, ताकि उन कॉमन नैतिक मूल्यों को खोजा जा सके जो हम सबको जोड़ते हैं। मानना यह है कि रास्ते भले ही अलग हों, पर वे सब एक ही सच्चाई की तरफ इशारा करते हैं। दुनिया को देखने के अलग अलग तरीकों को भी सच्चाई के अलग अलग मॉडल्स के रूप में समझा जा सकता है। जैसे द्वैत दर्शन कहता है कि भगवान और इंसान अलग हैं, जैसे राजा और प्रजा। वहीं अद्वैत कहता है कि दोनों एक ही हैं, जैसे सागर और उसकी लहरें।
एआई हमें ये समझने में मदद कर सकता है कि ये अलग-अलग मॉडल्स एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि एक ही सच को देखने के अलग-अलग नजरिए हैं। तो असल में इसका नतीजा क्या हो सकता है? ये सिस्टम वर्ल्ड क्लास एजुकेशन को हर किसी के लिए आसान बना सकता है, समाज में तनाव को पहचान कर किसी बड़े झगड़े से पहले ही चेतावनी दे सकता है और पूरी दुनिया के योगदान के लिए एक निष्पक्ष और योग्यता पर आधारित सिस्टम बना सकता है। और ये सब कुछ हमें आखिर में मानवता के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हमारे भविष्य की दिशा तय करेगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये एआई सच में मानवता को एक करने वाला एक टूल बनेगा, या फिर ये सिर्फ हमारे बीच की गहरी दरारों को और साफ दिखाने वाला एक आईना बनकर रह जाएगा? और इसका जवाब टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि हम सब में ही छिपा है।